Banana.
So, good morning, all of you. You all, so, good morning, all of you. You all are listening my voice? Yes or no? Yes, sir. Okay. So, first thing that you need to remember, when you have any queries, then you can open your mic. But when you're opening your mic, what the things you need to ensure, there's no background sound. Okay. And if you have any kind of other query, either you can drop me a message in the chat box, either you can ask with me. Okay. So now basically what we have to start from today, basically, this is the first day session. So second day basically, but the first day, some people will be not able to join or something. That's why. So basically what I am going to do, I'm not going to tell you everything about the concept of core Java, but the topic that we are going to use, that I can just give you one quick revision. Ki how we can work on Android and which topic of Java is important to use in Android. तो उसके लिए कल मैंने भी डिस्कशन किया था, उसी डिस्कशन को हम आज आगे भी करेंगे, ठीक है ना? So basically, what the things we are going to understand that I'm just going to tell you now. Firstly, what I'm just going to tell you that what we have to learn basically a notepad. Basically, we have to learn about as a concept about interface. जो हम चीज पढ़ेंगे क्या होगा? That the first thing what we can learn about the concept of interfaces. Why we can say interface is the reason behind it is because everything that we are going to use in Android, lot of things is an interface. Everything is basically we can say interface. After that, we also record a one concept that is known as inner classes. What were things we can discuss? That is a concept of inner classes. Inner classes is what? Inner classes we can say inner classes a concept for a class inside a class. So basically what happens when you're working on Java, when you are working in Java, what the things is required to understand, that I'm just going to tell you. Okay, so that we can wait for 2-3 minutes, then we can start the session. I am sharing one also link that you all can join it. Okay, why you have to join? Because any information that you received regarding a training that you come get from this chat. So I'm sending you one chat, a WhatsApp group information that you can all add it. Means you all can join this group. Okay, I already sent you the link, so you can join this.
So now we have to begin with the concept, and now we can begin with the core Java concept. So basically what I am doing for the learning of Android, है ना, which topic is required, यानी core Java के कौन से topics हैं जो हमें पता होने चाहिए. तो सिर्फ पहला टॉपिक जो हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, that is a concept about interfaces. Second concept is we can and must need to understand a concept regarding inner classes. Why we can say inner class? Because anywhere when you are doing the concept of event handling, for event handling we always prefer a which concept? We always prefer the event handling concept, and that's why inner class is one of the most important thing. And after that we also have one concept, that is collection framework. So in 2 or 3 days we can cover all these things. In 2 or 3 days we are going to cover all these things. So what happens, we are able to understand if you can write something, either you are doing any kind of work, that not create any kind of problem to you. So for that purpose we can start with the concept. One more concept we can also add here if you want to add, that is a string concept. Okay, so basically how many people is aware already installed the Android Studio in your system? How many people? The first thing you all need to remember is what? Everyone's system must be ready with Android Studio within a 2 or 3 days. Today is a Friday, next day is a Saturday, and then there is a Sunday, and then Monday. I hope everyone can ready your system with Android Studio till Monday. Everyone able to do? सभी लोग कर लेंगे? Yes or no? Just remember that you always require the internet connection when you are doing the work of this, because for the Android Studio you must need the internet connection at the time of creation of a project, either installation. So you must need to remember that. Okay, your system must be connected with internet. So now we have to start with the concept. So now So now we have to start with the concept of basically, firstly we have to understand the concept regarding, we are not going to understand now today's as Java. We are just going to understand about today's keywords as well as it's a concept about the identifier. Why? Because when we are making an application in Java, we must aware about the concept of how we can declare the variable and how we can declare the class, how we can declare the variable and how we can use this. So that's why we must need to aware about that concept. So first concept that we are going to understand about the concept of keyword. So keywords. So what is a keywords? Keyword is basically a concept. A keyword is a reserved word. Keyword is what? A keyword are the reserved word for the compilers. तो एक चीज लगना है what we can say कि जो हमारा कीवर्ड होता है वो क्या होता है? रिजर्व वर्ड होता है किसके लिए? फॉर द कंपाइलर, फॉर द कंपाइलर्स.
ठीक है ना. So अब क्वेश्चन आता है how many words. अब क्वेश्चन आता है why we have to use the concept of, because we know write the keyword, the lot of things can be done by your keyword. Lot of things can be done by the keyword, and that's why you can say one keyword is always play an important role. So for that purpose, I can open something and then we can discuss about that one. Now, so first thing is what we are going to discuss about the keyword. So what I'm saying that a keyword are a special reserved word in Java that you cannot use as an identifier. Names for a classes, methods are variable. देखिए जो भी हमारे keywords हैं उनका हम यूज कहाँ नहीं कर सकते, cannot use that for giving a name for classes, methods are variable. Which we cannot do this. Why? Because you can use that as a keyword. Keyword you can use as an identifier, then you are not able to perform any kind of task. So for that purpose, you must need to aware about this key how we can do the work. Now, what the thing is, these have a meaning to the compiler. That I already told you that keyword is always meaning for the compiler, not for the system basically. So that's why we can say it's a meaning to the compiler and use them to figure out what your source code is trying to do. Means आपका source code करना क्या चाहता है? What your source code is actually want to do. And now it should talk about the keywords. How many keywords in Java? So there's a lot of keywords in Java. We can see there. A list of keywords. There's a lot of keywords you can see. I can explain it. Not I'm just going to explain all, but I'm just going to explain you few. Because so many keywords you already listen. There's a one keyword, his name is abstract, and that is basically known as for if you want to define your class or function will be abstract as we can use this concept. Means we can use the abstract keyword. Second is your a default. Default is basically means is where default is used for providing. So basically, you can say default is a one kind of thing is access modifier. But this default can be work of different work also there. And in Java, this default can do a different work also. Then we have a concept of implement. After this, we have a one another concept keyword is implement. Implement say that when you want to implement any interfaces. Look, basically what I meant, when you're working with the class to class, we can use the concept of extend. But when you're using the word concept is class to interface, then we must need to implement this method. And that's why in that position, we can use the concept of implement. And in Android, we are going to do this kind concept very much. That means we require to implement the math interfaces. We require to implement the interfaces because Android is what? It's a collection of interfaces. You have a lot of interfaces that you need to implement, and then you have to provide the definition. That's the concept of this. Then we have a concept of protected. Again, it's the accessibility. Throw, we can use an exception handling. Assert is a concept we are working on the concept of assumptions. So basically, by default, assert concept is disabled in your CMD. Then we have a concept of do. Do is work with the do while. Then we have a concept of import. Import for importing any particular class or interface. And that is also going to play a vital role. Then we have a concept of public. Public means the things can be accessed anywhere. The things can be accessed in anywhere. That means within a package, outside the package, in inheritance,
No, in non-subclass. Everywhere you are going to access this concept. Then we have a throws, again the concept of exception handling. Boolean double. No, I think ये दोनों आपको पता है. Then we have an instance of. Instance of is basically work. If you want to check that this object is a object instance of this class, if yes, then it will be written as true. Suppose that you have created a one object or test equal to new test. And then if you want to check that a t is instance of test, so it will return always true. Return is basically again a keyword, a transient. तो यहाँ पे transient का मतलब होता है जो when you want your entire class is serialized, but you want to this variable cannot be as serialized. यानी आप चाहते हो कि पूरी क्लास serialization को follow कर रही है, but you want that this attribute cannot follow the concept of serialization. Then we can make that variable be your transient type. Okay, so there you can see. अब इनमें से कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपको नहीं पता है? आई एम जस्ट आस्किंग विथ ऑल ऑफ यू. आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस दैट ओनली. Yes, all of you. You all can review this and tell me Manish, what you are not getting? क्या चीज आपको समझ में नहीं आ रही? जस्ट आस्क इट. फील नहीं रहा? व्हाट द फील? Now, I'm just going to write down this on a notepad and then you are able to understand what. अभी तो कुछ हमने implementation भी नहीं किया है. We are just talking about the keywords only. Now, एक क्वेश्चन पूछा गया है, that is what is the meaning of strict FP. Okay, this is basically stand for strict floating point. देखो आप लोगों ने एक पॉइंट समझा होगा कि स्ट्रिंग फ्लोटिंग पॉइंट का रोल ये होता है कि अगर आप प्रोसेसर चेंज करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि जब प्रोसेसर टू प्रोसेसर चीजें चेंज होती हैं, then you maybe get a slightly difference in floating point. यानी जो डेसिमल के बाद की वैल्यू है उन फ्लोटिंग पॉइंट में कोई चेंजेस हो सकते हैं. अगर आप उस चीज को भी रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो इन जावा तो आप वो काम कर सकते हो विद द यूजिंग द कीवर्ड इज स्ट्रिक्ट फ्लोटिंग पॉइंट. और ये एक तरीके से नॉन एक्सेस मॉडिफायर होता है. इसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज अ नॉन एक्सेस मॉडिफायर. गॉट इट? तो स्ट्रिक्ट फ्लोटिंग पॉइंट का ये यूज होता है. ठीक है ना? एंड सेकेंड आप में से पूछा गया है, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंक्रोनाइज. Now, what is the meaning of synchronize? That we are going to understand. How many people is aware about the concept of deadlock situation? I think you all are basically belong from second year, maybe. So I think everyone is aware about the concept of a deadlock situation. Got it? So when you're working on the concept of deadlock situation, what the problem occur and why we have to use the concept of synchronization. Basically, when you're using the synchronize keyword, it will do the work. It will do the work is what? It will remove the
या you can say it will restrict your threads for a racing condition. यानी synchronization का यूज करके we can eliminate the racing condition between threads. यानी हम थ्रेड्स के बीच में क्या कर सकते हैं, रेसिंग कंडीशन को एलिमिनेट कर सकते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंक्रोनाइज्ड. Deadlock is basically not mean for infinite loop. Basically, deadlock means is basically when your application is not able to do any kind of work due to a resource unavailability or not getting that. Road blockage is what? A road blockage, a concept is what? कि आप किसी जाम में फंस गए तो हम क्या बोलते हैं? That's a deadlock situation. That's a deadlock situation. ना हम इधर जा पा रहे ना ही हम उधर जा पा रहे. That is a deadlock situation. Infinite में एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है इनफाइनेटली, वो एक डेडलॉक सिचुएशन कब आती है? जब स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा, दैट टाइम. क्लियर? तो हम इसे क्या बोलते हैं? जब हम रेसिंग कंडीशन को एलिमिनेट करना चाहते हैं, वी वांट टू एलिमिनेट द रेसिंग कंडीशन, देन वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंक्रोनाइज. आफ्टर दिस वी हैव अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज योर ट्रांजिएंट. Which keyword we have? Transient. अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिएंट. तो मैंने आपसे कहा एक कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हुए वी ऑल नो दैट अ कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग सीरियलाइजेशन. Just put before the function name. Means when you're typing the return type, you can write like this. Something like this. Okay. अगर आपको strict fp यूज करना है तो क्लास से पहले यूज कर लो strict fp. Which we have to use? We have a concept of strict fp. Yes. If you want to use the transient, you can use like this, transient int a. So with the help of this, you can do the work. अगर आप function बना रहे हो, you can make it as a synchronized type. So what happens now? It will remove the concept of remove the elimination of racing condition between two threads. One need to wait if anyone can get the memory. Clear now? तो ये हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट थे जो आप लोगों ने तीन क्वेरीज की थी, ट्रांजिएंट, strict fp and synchronized. Okay. Except this in Java we have a literals also. Literal as a keyword. वो literal as a keyword कौन कौन से होते हैं? That is what your a null, true and false. These are the keywords. Any other queries? Anyone? Except volatile. No. Okay. So basically what things is there, volatile you can understand like that. It's again using in a concept of threading. It's all again we can use in which side? Inside the concept of threading. Suppose that कि हम ऐसे कह सकते हैं कि जब आप किसी भी वेरिएबल के या किसी भी वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ
Volatile, so what happens? Now this value may be going to be modified by the other thread also. This value is going to be what? Modify the other things also, यानी किसी और क्लास थ्रेड के द्वारा भी वैल्यू क्या की जा सकती है? मॉडिफाई की जा सकती है. And that's why we can use the concept of a volatile. So that's why how you can write this thing volatile. We can simply write the static int. Before this, we have to again tell the volatile. Volatile int, and then you can define any variable that is v, yeah, a equal to something. Okay, na? So what happens now? Volatile means now this value can modify the other by other thread also. ये इस value को कोई और भी thread क्या कर सकता है? Modify कर सकता है. Clear? तो ये हमारा होता है वर्क ऑफ volatile. It's not compulsory, because if you not assign a class level variable is always initialized with default value. Kishan, your class variable is always initialized with default value. So if you not initialize it, then it will be by default 0. If you not initialize, then by default it's a 0. Clear? So now this is basically a sum point that we have to discuss for your knowledge point of view. Okay. Now, after this, one of the most important things, we must need to aware about the concept of identifier. How many people is aware about the concept of identifier? This is first, they basically for everyone. So that's why I'm asking. What is the meaning of identifier? Anyone can tell me? Basically, अगर नहीं पता है, can just tell you all of you. When we're talking about the concept of identifier, identifier is basically concept when we are saying the unnamed memory location. Name of variable is okay, but वो किसको name दे रहा है? Understand the point. What I am told you, what is identifier? Identifier is basically known as the concept of a named memory location. Named memory location. Why we can say a named memory location? So basically, when we are declaring a variable, what it will take place? When you're declaring a variable, it is taking a one memory in memory section. So how you can identify this memory? That's the use of a variable. Then we are using the concept of variables. So identifiers का मतलब होता है with the help of identifier हम किसी memory location को identify कर रहे हैं. We are identifying some memory location with the help of concept. Which concept? With the concept of memory block. तो simple सा concept समझना. मैं अगर आपसे कहता हूँ you have to go this place. Understand point सभी लोग 90.567 and you can go 87.456. If I told to you that you have to go this place, कितने लोग यहाँ पे जा सकते हैं? I think बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होगी. क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की. बट अगर मैं आप सभी लोगों से कह दूं ये जो लिखा हुआ दैट इज इक्वल टू पटना रेलवे स्टेशन,
Then how many people are able to go there? I think everyone can reach there. Why? That point you need to understand there. कि जब हम ये बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है? Because हमने किसी मेमोरी लोकेशन को एक नेम दे दिया, और जब आप किसी एक मेमोरी लोकेशन को नेम दे देते हो, इट्स easy to get it. If I ask the simple question with all of you, how many people is remember your 10 friend phone numbers? मेरे हिसाब से I think there's a 20 or 20 people are there, so I think just 1 or 2 people are there who maybe remember the 10 friend phone number. But if I ask how many friends are remembered all friends name, so obviously everyone can remember it. तो कुछ डिफरेंस यही होता है कि हमें नंबर सिस्टम्स को याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है एवरीवन, एंड जो दैट्स व्हाट वी कैन से कि हम जितना यूजर फ्रेंडली होते जाते हैं उतना ही कॉन्सेप्ट हमारा किस पे वर्क करता है? वी हैव टू वर्क ऑन अ विच कॉन्सेप्ट? तो अब इसीलिए हमें क्या हो जाता है? रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, प्लस मेमोरी बढ़ जाती है, एंड सो तो दैट्स वी ऑलवेज यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिफायर, यानी हम किसी मेमोरी लोकेशन को क्या देते हैं? नेम देते हैं। अब वो कितने ब्लॉक साइज का होगा वो डिफरेंशिएशन होता है। जैसे गवर्नमेंट जब प्लॉट्स डिफाइन करती है तो क्या करती है? गवर्नमेंट भी प्लॉट्स के नेम रखती है, और उस नेम के अकॉर्डिंग से पता होता है दिस इज अ विच साइज ऑफ प्लॉट। ए रखा तो इतना होगा, A1 रखा तो दैट साइज इज दिस, बी रखा तो इतना साइज होगा, B1 रखा तो दिस इज अ साइज। तो यानी हमें यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं होती है। Got it? So that's why you can say it's one of the most important thing when you are working on a this type of concept, we always focus on always focus the concept of readability as well as memory point of view. तो यहाँ पे आपको ये चीज यहाँ पे याद रखनी, ठीक है ना? मैंने आप सब लोगों को एक ग्रुप का लिंक शेयर किया है। आई थिंक यू हैव नो वन हैव ज्वाइन, तो यू ऑल कैन ज्वाइन दिस आल्सो। गॉट इट एवरीवन? जितने लोग भी प्रेजेंट हैं, यू ऑल हैव टू ज्वाइन दिस ग्रुप because you can receive every information regarding training there. So now we have to start the concept more. So basically identify, and there are some rules. Rules is what? When you're declaring any variable, it can be any length. Just remember that it will be any length. Second thing, it must be a follows rule what? Key your Java is a case sensitive language. Your Java is what? A case sensitive language. So when your Java is a case sensitive language, what we can say? It must be removed. It must be a, sorry, when your Java is a case sensitive language, you must be aware that a capital letter and a small letter both are the different. Your capital letter and a small letter both are the different. Clear? This thing is no. You can use only underscore and dollar symbol. यदि अगर आपको स्पेशल कैरेक्टर्स यूज करना है, you can only use the concept word underscore as well as dollar symbol for the identification of any variable name and other rows. So that is the basically concept that is we can understand from this. This is a data type. So now the identifier. Identifiers is kind of a programmer defined tokens, but they are used to naming the classes. ये इसकी workings हैं, method, variable, package and interfaces of a program. Now rules for legal and illegal identifier.
तो पहला पॉइंट क्या रखना है, दे कैन बी अ सेट ऑफ अल्फाबेट्स, कुछ भी हो सकते हैं, digit underscore and dollar symbol. If you remember in C language, you can only use the concept of underscore. You cannot use the dollar symbol there. They must not begin with the digit. They must not begin with the digit. यानी आपका कोई भी वेरिएबल या आइडेंटिफायर डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता. Third point, uppercase and lowercase are the distinct. Why? Because Java is a case-sensitive language. Uppercase and they can mean any language. I can simply say you that when you're talking about the C language, again, there's a limitation. But in Java, you cannot make a variable with any number of characters. But remember that it's always good if you make your variable name is as much as smaller possible. अब ऐसा नहीं है you can write a 256 character word as a variable. So what happens? I think जितना आप कोड नहीं लिखोगे इससे ज्यादा आप क्या लिख दोगे, उस वेरिएबल के नेम लिख दोगे if you're using the 2 times only. So that's why always use the concept is a smaller naming convention. इसे first name है, so you are not trying to write down the first underscore name, just type f underscore name, that is short the thing. So that's the thing is basically used for the identifier. Now we have a second concept is what? A concept regarding literal. Concept regarding literal. What the things we have to understand in concept regarding literal, we can focus it there what? When you are working, literal is basically used for declaring a constant value. Why we have to use the literal? Literal is used to define the constant value. यानी अगर आपको constant value define करनी है, then we have to use the concept of literal. Yes, anyone have queries regarding these points? Okay. So now, when you're talking about the literals, so basically we have a 5 type of literal in there. How many type of literals are there? There is a 5 type literal. Integer, floating point, character, string, and boolean. So when we're talking about the concept of integer literal, it is again a 5 type. जो हमारा integer literal होता है, that is also a 5 type. Question होता है that which are these literals? So basically these are literally what that we are going to understand one by one. Integer literal is basically a 5 type. The first type is a octal number. Second type is hexadecimal. Third type is first is octal, second is hexadecimal, third is decimal, and fourth is a binary type. Fourth is your binary type, and fifth is your a number with underscore concept. Fifth type is what? A number with underscore concept. So now question come in our mind, why we can say this, how we can differentiate this. You see there. देखो जावा का मैं एक ऐसा मे बी हाउ मेनी पीपल इज अवेयर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट आई कैन जस्ट शो यू cmd cd backslash understand that cd program file cd java and then cd jdk cd bin
and J cell. Understand the point. देखो, आई थिंक आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी पाइथन पढ़ चुके हैं। अगर आप पाइथन में चीज देखते हो कि यू कैन टाइप समथिंग एंड गेट द आउटपुट एट द सेम टाइम, ठीक है ना। जावा में भी वो चीज राइट नाउ अवेलेबल है जिसे हम बोलते हैं जे शेल, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे वहां पे आपको पाइथन से मिलता है, वैसे यहाँ पे क्या मिलता है, वी कैन गेट द जे शेल एंड वी कैन यूज दैट फॉर अ क्विक टेस्टिंग एंड टाइपिंग। तो इसे हम बेसिकली एक तरीके से बोलते हैं अ रिपेल कॉन्सेप्ट ऑल्सो। क्या बोलते हैं यहाँ पे जावा में इसे, रिपेल। मैंने कहा इफ यू कैन राइट int I equal to this, see understand what is the output of this? Just tell me quickly, what is the output of this? If I print I, what the output we can get? If you print this, okay, no output. Any other? What's the message we are getting? What's the value of I? That's 83. कुछ confusion हो गया? Okay, we will make one more change. I equal to, ठीक है? Now, what is the output now? Kishan, we can discuss it. Just wait. देखो, this is the first 2 days. We can discuss about the Java only. The concept we have to discuss, and then we can move for the Android in Monday. From Monday onwards, we can move for the Android. So for first Monday, today, and then tomorrow, we can discuss about the concept of Java. Yes. Now, what is the output? Manish, tell me. No idea? Okay. 88. Samir. That generate an error. यही हमारा कहलाता है ऑक्टल नंबर. That is known as octal number. If any number in Java begin with 0, if any number is begin with 0, that number is octal number. That number is what? Octal number. So octal number is what? Octal number is basically a concept when we are talking about is what? Octal is only contain a 0 to 7. अब मैं आपको conversion बता देता हूँ, all of you. How that is coming is 83. That I can just show you with this thing. देखिए, when you writing something like this, जैसे ही आप लिखते हो, क्या लिखते हो? 1, 2. This is your number. We know that this is an octal type. So what happens? We know that 3 into, we have to use the concept of 8 raised the power 0. 8 raised the power 0. So we know that 8 raised the power 0 means what? A 1 plus 2 into 8 raised the power 1. यहाँ ध्यान रखना है, I'm just right now using this as a raise the power, but actually this is known as the XOR operator. इसे हम XOR operator बोलते हैं, ध्यान रखना. This is known as what? XOR operator. This is not the power symbol, but मैं आपको सिर्फ notation के लिए चीजें लिख रहा हूँ. Got it? And plus, what we can say, 1 into 8 into raised the power 2. So what happens? 8 raised the power this, so it will become a like this. 1 into 64 plus 2 into 8
plus 3 into 1. And if you do this work again, calculation 64 plus 16 plus 3. I hope so you can get the output is 80. Clear सभी को कि how that is coming is 83. Clear? तो इसी टाइप को हम बोलते हैं दैट इज नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्टल नंबर. इसी को हम बोलते हैं ऑक्टल नंबर कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टल. देखो जब भी हम प्रिंटिंग करते हैं बाय डिफॉल्ट जो प्रिंटिंग होती है हमेशा होती है इन फॉर्म ऑफ डेसिमल टाइप. बाय डिफॉल्ट जो प्रिंटिंग होती है किस टाइप में होती है? ऑलवेज द प्रिंटिंग हैज हैपेंड इन फॉर्म ऑफ डेसिमल टाइप. Now we can come back there. Now if you like this, int I equal to that is written a hexadecimal number. See there. Octal is start with 0 and hexadecimal is start with 0 x. Clear everyone? This is a binary type. So binary type will be start with the concept of 0b. And if we can say int I equal to 123, it's a decimal type. And if you write like this, int I equal to that concept is known as a number with underscore. इसी concept को हम क्या बोलते हैं? A number with underscore. इसी concept को हम क्या बोलते हैं? That concept is known as concept is a number with underscore. बेसिकली इसके पीछे बहुत से रीजंस हैं समीर. देखो what happens when you have to write the bigger number. If you have to write the big number, you always do the working is कि we have to count the character, how many characters are there. मैंने कहा आपको you have to write a 10 million something, then you can face the problem maybe, ठीक है ना. But when you use the underscore, so they can be separated accordingly. अब फिर आपके उन्होंने क्वेश्चन आंसर तो फिर उसके लिए कॉन्सेप्ट लगाना चाहिए था कि दैट विल बी यूज एट दिस प्लेस आइदर एट दिस प्लेस. तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. व्हाई? क्योंकि बेसिकली क्या होता है एशियन कंट्रीज में अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे बेसिकली बात होती है 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ and so on. But if you go to the European or foreign in other countries, so what happens? They always talk about the concept of a million and billion. यानी उनका कॉन्सेप्ट सिंपली क्या होता है 100, 1000, 1000 से बाद सीधा हो जाते हैं मिलियंस पे और मिलियंस पे जाते हैं फिर वो बिलियंस. Got it? So 1000 is 1 million and 1000 million is equal to 1 billion. So that's why you cannot give the assurance where we have to put the underscore. तो जावा ने कहा कहीं भी लगाओ. It's your choice. आपको लिखना है 10,000 समथिंग, यू कैन यूज इट एनी केस, दैट्स योर चॉइस. आपको 10,000 एज अ इन फॉर्म ऑफ 1000 लिखना है तो यू कैन अगेन राइट डाउन, देयर इज नो प्रॉब्लम. तो दैट्स व्हाई कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं होती. क्लियर? तो दैट्स व्हाई वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस. एनी अदर क्वेरीज? तो आई थिंक पांचों लिटरल्स आपको क्लियर है. अगर आप कभी भी कांस्टेंट डिक्लेरेशन देखते हो इन सब का यूज करते हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ठीक है ना.
बट हाँ ये ध्यान रखना है, इनपुट के टाइम पे अगर आप ऐसा करते हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है. They are basically for the defining the constant value only. Clear? Now, up question आता है, we can move further concept. Second is concept is your a concept regarding literals mode. So now in Java you can use a boolean literal. How? A boolean equal to, we cannot write a 0. If you want to use this concept, you have to use the concept of true and false. Yani in Java, we cannot use the concept of 0 or 1. We always need to use is what? Either that is a true, either that is a false. Either that is a true, either that will be your false. तो जैसा हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर लिया, क्लियर. ये होता है हमारा boolean literal. So boolean literal means if you want to define the constant for the boolean type, we must use the concept of either true, either false. After this, again we have to do the work is, and we can make the scenarios what? Character. Char equal to something. If we can write like this, it's a correct or incorrect? Incorrect. Okay. Why that is a incorrect? That is correct one. That's not a incorrect. See there. It is character, but it can hold the ASCII value also there. Okay, so capital Z is meaning is what? It will take the ASCII values also there. So that we can say कि now when you're working on Z, 90 पे क्या होता है? Capital Z की value होती है. क्या होती है? This is a concept as capital letters. So now that's a working. Now that is correct? This is correct or not? देखो, this is RCS, this is not the string value. In Java, if you want to initialize the string value, you must need to use the concept of double quotes. With the single quotes, we cannot define the string values.
नाउ दैट्स अ इनकरेक्ट, ये आपका इनकरेक्ट होता है, ध्यान रखना, ये लिटरल्स में इसीलिए समझा रहा हूँ. That is the incorrect because it will holding the two character at the same time. It will holding the two character at the same time. The one character is 9, another character is 0. The one character is what? 9 and another character is what? A 0. And that's why you are getting an error there. Got it? So now this we can do the work. So this is the things. And जो लोग अभी आए हैं, they can also join the group. I'm just sending the link again. Who join right now training, they can also get it, okay, and they join the batch, as well as you also try to come on time from tomorrow onwards, okay. ठीक है. Now अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि देन हाउ वी कैन डू द वर्क. तो यहाँ पे टू कैरेक्टर्स क्यों हैं? तो बेसिकली व्हेन वी डूइंग द वर्क ऑफ सिंगल कोड, we can use like this. So 9 is a one character and you can see 0 is another character. 9 is a one character and 0 is another character, and that's why so that's why we can do the work is what chars equal to this and equal to this. So now again this is a basically concept. Your one character can always hold the single character value. So 0 is a one character and 9 is also a one character. Now if we do the work is what, तो यहाँ पे एक और चीज हम कर सकते हैं, char if you can do the work is what, a char c equal to, if you write as what, at the rate, and that is correct or incorrect? Again, correct. Why? Because every alphabet, anything you can type, that is a character. Anything you can type, that is what, a character. So that is the correct one. तो सीधे यहाँ पे ये भी क्या है आपका correct है. Got it? तो इस तरीके से हम character literals को use करते हैं. This is the concept of character literal. But if you write us something like this, equal to, this is correct or incorrect? This is also correct. ये भी क्या होता है, करेक्ट होता है. दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिकोड सिस्टम. इसी को हम क्या बोलते हैं, इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिकोड सिस्टम. सीधे चीज ध्यान रखना. जैसे आप, जस्ट वेट किशन, एक क्वेश्चन आता है मन में, ठीक है ना, कि जावा में जो कैरेक्टर होता है कितने बाइट्स का होता है?
जस्ट निगार, जस्ट टेल मी, इन जावा जो आपका कैरेक्टर होता है कितने बाइट का होता है बाय डिफॉल्ट? 1 बाइट। किशन, हाउ मेनी बाइट ऑफ कैरेक्टर्स इन जावा? यानी जो साइज होती है कैरेक्टर्स की कितने बाइट की होती है इन जावा? आई फील दैट कि सब लोग पढ़ के आए हैं। बेसिकली ध्यान रखना कि जो हमारा जावा होता है, जावा में जो हमारा कैरेक्टर होता है वो बाय डिफॉल्ट 2 बाइट्स का होता है। कितने बाइट्स का होता है? दैट इज अ 2 बाइट्स। ठीक है ना, सब लोगों को क्लियर? कितने बाइट्स का होता है? 2 बाइट्स का। बट जो आपकी अदर लैंग्वेज होती है, जैसे सी होता है, सी में वो 1 बाइट होता है। सी में कितने बाइट्स का होता है? इन सी दैट इज ओनली 1 बाइट। तब क्वेश्चन आता है फिर डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाइट और 2 बाइट? देखो जावा में आपको पता होना चाहिए, इन जावा यू हैव अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग हिंदी फॉन्ट्स आल्सो। यानी जो जावा है वो हिंदी के फॉन्ट्स तक को भी सपोर्ट देता है, और वो सारे वैल्यूज आपको मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ विच कॉन्सेप्ट? विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। यानी विच कॉन्सेप्ट वी कैन यूज द a cat c equal to this, यानी यूनिकोड सिस्टम के बिहाफ that we can get with the help of a Unicode system, and that's why character is a 2 byte here। इसलिए character यहाँ पे कितने बाइट का है? 2 बाइट का बनाया गया। तो अब क्वेश्चन आता है यूनिकोड सिस्टम पे। यूनिकोड देखो, अस्काई में आपको एक चीज पता है, अस्काई में आपके पास सिर्फ 256 कैरेक्टर्स होते हैं। इन अस्काई वी हैव ओनली 256 कैरेक्टर्स। इन एस्काई वी हैव ओनली 256 कैरेक्टर्स, यानी एस्काई में हमारे कैरेक्टर्स ज्यादा नहीं होते हैं। एंड व्हेन दैट वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ कैरेक्टर, देन हाउ वी कैन वर्क? तो अब क्वेश्चन आता है कैसे हमें उससे वर्क करना है। तो ना उसी पॉइंट को समझने के लिए यहाँ पे हमें कुछ चीजों को समझना जरूरी है। देखो बेसिकली क्या होता है, दिस इज अ कॉन्सेप्ट कि ये हमारा एक क्या होता है, दैट इज योर यूनिकोड वेरिएबल्स। ठीक है ना, यूनिकोड की जो वैल्यूज होती हैं वो स्टार्ट होती हैं \u 4 times 0। This is the first value, and this is your maximum value, 4 times 0, and then we have to use the 4 times. Now Nigar, can now you can assume that how many range in between this? It's a more than 1,50,000 characters. Yeah, you can say a more than 2 lakh characters. हमें से क्या मिलेगा? We can get a more than 2 lakh characters. 0 to 9 is your 10, and then A to F, that is a 16. So 16 C4 निकाल लो कि you can get the value कि how many characters possible। तो ये इसकी मैक्सिमम रेंज होती है। अब ध्यान रखना इसमें 3 नहीं हो सकता, वी कैन राइट द 3, यानी \u के बाद आपके पास 4 ही एलिमेंट्स होने चाहिए। दैट इज व्हाट योर चॉइस, बट दैट मस्ट बी अ फॉर अ डिफरेंट थिंग। अब जैसे अगर मैंने यहाँ 3 रख दिया, दिस इज व्हाट वी कैन गेट। इफ यू पुट इज अ 3 ओनली, इट इज एन एरर, क्योंकि इसका जो फॉर्मेट बनाया गया वो सिंपली कहा गया। देखो क्या कह रहा है, इलीगल यूनिकोड स्कैप कैरेक्टर्स, यानी अगर हम कुछ ऐसा काम करते हैं तो वी कैन गेट एन एरर। तो बेसिकली अब क्वेश्चन समझना, आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो
हाउ मेनी पीपल अवेयर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस? कितने लोगों ने ये किसको, कितने लोगों को ये नहीं पता है? व्हाट इज द यूज ऑफ बैक/n? चेंज लाइन, दैट वी आई थिंक एवरीवन अवेयर। ओके, अब इसी को हम बोलते हैं, इफ यू राइट द बैक/n, इसे हम बोलते हैं एस्केप कैरेक्टर। इसी को हम क्या बोलते हैं? escape sequences, or you can say it's known as the concept of escape characters. तो जब हम बात करते हैं escape characters की, that time यूज करते हैं बैक/n। क्या नहीं समझना, अगर आप n लिखते हो तो उसका अलग मतलब होता है। इफ यू राइट n, इट्स अ डिफरेंट मीनिंग, ठीक है ना। बट व्हेन बैक/n come together, it will produce a new line concept। ये हमेशा क्या प्रोड्यूस करता है? एक न्यू लाइन के कॉन्सेप्ट को प्रोड्यूस करता है। तो यहीं पे हमें तो चीज समझनी होती है कि व्हाई इट विल प्रोड्यूसिंग अ न्यू लाइन, द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस यूनिक दिस कॉन्सेप्ट इज कैरेक्टर। तो जैसे ही आपका कंपाइलर इनकाउंटर करता है बैक/u, इनकाउंटर करता है, it will encounter the \u, it will identify that this is a Unicode value. This is a Unicode type value. So when that is a Unicode type value, then it will be processed. तब वो क्या कहता है? प्रोसेस किया जाता है। एंड देन फिर उसके बिहाफ पे जो उसकी वैल्यू होती है वो वहां से वैल्यू लाके आपके पास दे दी जाती है, ठीक है ना। तो इसकी मिनिमम रेंज क्या होती है? इट विल बी फॉर 4 टाइम 0, द मैक्सिमम इज व्हाट? अ 4 टाइम f। यू कैन गेट एवरी लैंग्वेज, यानी जितनी भी लैंग्वेज इंडिया में बोली जाती है लगभग सारी लैंग्वेज अवेलेबल है किसके अंदर? इनसाइड दिस। क्लियर? नाउ क्लियर? यस और नो? ठीक है, तो ये हमारा होता है स्कैप कैरेक्टर्स, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। इसी को बोलते हैं हम थर्ड टाइप ऑफ लेटर्स। इसे हम क्या बोलते हैं? थर्ड टाइप ऑफ लेटर्स। ना अब नेक्स्ट आता है, दैट इज व्हाट वी हैव अनदर टाइप ऑफ लिटरल, एंड दैट इज अ फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। Which literal we have? A floating point literal. Why we are talking about the floating point literal? We can write like this. If you write like this, float a equal to 54.67. Ishan, already I told you this is the minimum range. The range will start from this. तो क्या आपको स्काई 0 पे कैपिटल ए मिलता है? स्काई का अपना सीक्वेंस है, ठीक है ना, और यूनिकोड कैरेक्टर्स का अपना सीक्वेंस है, ठीक है ना। मैंने कहा स्टार्टिंग यहां से होगी, ये \u 4 टाइम 0, बट जो मैक्सिमम रेंज जा सकती है कहां तक जा सकती है? \u 4 टाइम f। so now you have to write anything, ठीक है ना। आपको कोई ना कोई कैरेक्टर्स मिलता रहेगा, और आपका कमांड प्रॉम्प्ट जो कैरेक्टर सपोर्ट करेगा वो आपको दिख जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे क्वेश्चन मार्क या बॉक्स बन के आ जाएगा। क्या बन के आ जाएगा? बॉक्स बनकर आ जाएगा। Now again we have to come there. So now what we have to do the work? If you put the f here, so if you not put f, so you can get an error. देखो क्या कह रहा है? What is incompatible type possible lossy conversion? Lossy conversion का मतलब होता है it may lose the value, यानी ये वैल्यू लॉस कर सकता है। It will lose the value। क्यों? क्योंकि फ्लोट पॉइंट है, दैट्स इट। नाउ अगर हम यहाँ पे कुछ और वर्क करें तो क्या हो जाएगा? We can do the work like this.
अब अगर आपको इस चीज को रेस्ट्रिक्ट करना है तो यू कैन यूज द एफ, आइदर स्मॉल एफ आइदर कैपिटल एफ. नाउ दिस वैल्यू विल बिकम अ फ्लोट. अदरवाइज वो ट्रीट हो रहा है डबल टाइप का, और डबल टाइप की साइज होती है 8 बाइट, और फ्लोट टाइप की जो साइज होती है वो 4 बाइट होती है. तो दैट्स व्हाई एफ क्यों कंपलसरी है यूज करना, so that your data type will be used in 4 byte. Otherwise it will hold the value of which type, 8 byte. तो हम 4 बाइट वेट डेटा क्या करेंगे, वेस्ट करेंगे. क्लियर. तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल. इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल. That is known as the concept of floating point literal concept. Now, next find how we can move. तो देखो उसके लिए हमारे पास लास्ट कॉन्सेप्ट है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल. स्ट्रिंग लिटरल विल बी यूज लाइक दिस. स्ट्रिंग s equal to anything you can write. We can write Patna. We are getting output like this. So that is known as the literal. And for the literal, we have a special memory area. For the string literal, we have a special memory area, and that is known as a string constant pool. इसे हम क्या बोलते हैं, that is known as the string constant pool. क्या बोलते हैं हम, ये वो स्पेशल मेमोरी एरिया जो कौन प्रोवाइड करता है हमें, जेवीएम हमें प्रोवाइड कराता है. सभी को इतने पॉइंट्स क्लियर है. आई थिंक यहाँ पे जितने लोग भी हैं सबको एक कॉन्सेप्ट पता होगा, दैट्स द लूपिंग. हाउ वी कैन यूज द लूप, हाउ वी कैन अदर थिंग्स. ठीक है ना. और अच्छा, ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑपरेटर्स आर देयर. Only few people are active and remaining people is what? So this is a training, so I feel everyone must need to be active. ठीक है ना. Mainly 6 type, 8 type, 8, 5, 5, 6, 7, 8. 4 तो आ चुके हैं. ओके. और मैं अगर कहूँ सारे गलत हैं तो yes, if I told everyone is incorrect, from my point of view, there is only a 3 type of operators. How many type of operators are there? A 3 type. हम लोग पढ़ने नहीं जा रहे हैं, बट यू मस्ट नीड टू अवेयर, क्योंकि मैं आपको एक आज और कल में 2 दिन में रिफ्रेशमेंट दे रहा हूँ अबाउट द रेफरेंस और कोर जावा कॉन्सेप्ट. आई थिंक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा,
यूनरी, बाइनरी, टर्नरी। यस, एक्सेप्ट दिस कोई ऑपरेटर आपने और देखा है? हम यूनरी क्या कहते हैं? रिक्वायर्ड यस। सो इन तीनों के अलावा आपने कौन से ऑपरेटर्स देखे मुझे बताना, ऑल ऑफ यू। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ही होता है, ओनली थ्री टाइप ऑपरेटर्स यू हैव लर्न। तीन टाइप के ऑपरेटर्स भी मेनली होते हैं, दैट इज यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। क्या होते हैं? यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। गॉट इट? अब क्वेश्चन क्या होता है, देखो आपको जो ऑपरेटर्स बनाए गए हैं वो आप पढ़ते हो एज ए कैटेगरीज। आप बोलते हो दीज आर द अर्थमेटिक ऑपरेटर। व्हाई वी कैन से अर्थमेटिक? क्योंकि हमें अर्थमेटिक ऑपरेशन करना है। Then we have a concept of a bitwise operator. We have a logical operator. We have a conditional operator. We have a assignment operator. So that is the concept basically. But when it comes the topic is this, operator कितने टाइप के? तो वो तीन ही है, unary, binary and ternary. यानी if you require a one operand, that's a unary type. If you require a two operator, that's a binary type, and this we got three operators, that is a ternary type operator. तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होते हैं हमारे ऑपरेटर्स के, ठीक है ना, जो हम बेसिकली आपको पता होना चाहिए ना। अब नेक्स्ट थिंग आता है दैट वी हैव गोइंग टू अंडरस्टैंड, एरेज की कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है? यस और नो? एरेज कितने टाइप्स के होते हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ एरेज इज देयर? हाउ मेनी टाइप ऑफ एरेज इज देयर? वन डी, टू डी, मल्टी डी। ओके, टू। देखो
first thing I tell you, when you're talking about the concept of a dimension, how many arrays are there basically? देखो normally जो आप पढ़ते हो, that we can say 1D or ND. Got it? जो नॉर्मली आपने अभी तक पढ़ा है वो सिर्फ यही पढ़ा है, आपने 3 टाइप्स नहीं पढ़े हैं नॉर्मली। और अगर 3 टाइप्स पढ़े हैं तो वो नहीं पढ़ा है जो आपने पढ़ा है। जैसे बहुत से लोग बोल रहे हैं इट्स अ 1 डायमेंशन, देन 2 डायमेंशन, देन मल्टी डायमेंशन। Tell me one thing, if you're saying that a 2-dimension array and multi-dimension array, then what is the difference between both of them? I think 2-dimension and multi-dimension is the same thing, because when we have more than 1 dimension, that is the concept of multi-dimension array. So here we have to write a 1D and ND. 1D means 1 dimension, ND means multi-dimension array. Now, how we can do the work? हम कैसे वर्क करते हैं? देखो, तो उसके लिए देखो सिंपल सा वर्ड हम कैसे लिखते हैं, अंडरस्टैंड पॉइंट क्लियरली। When we are talking on the concept of multi-dimensions array, but in Java we have another array that is known as the jagged array. But in Java we have another type of array that is known as the jagged array. Jagged array किसे कहते हैं? I can just tell you. Jagged here is a simple concept when we are working on a which concept? When we can say कि जब आपके पास जिग जैग फॉर्मेट फॉर्म हो जाए, क्या फॉर्म हो जाए? जिग जैग, तो उसे बोलते हैं जैग एरे। तो नाउ आई कैन जस्ट शो यू सम पॉइंट्स, और उसके भी यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रोग्रामिंग ही करके दिखा देता हूँ यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जैग एरे। which concept? Using the concept of jag. So I'm not going to do the coding in Notepad. I'm just going to do the coding in Eclipse basically. Now, inside this we can do the work. Now, right click new and we have to create a one class. We can give the name of that class is array, and we can create the main function also there. Now, what we have to focus basically we have to create a something. We can define int array of a comma b comma c of a. Now my question with all of you, in this statement, how many variable we have created? Means how many single dimension array is there, how many double dimension are there, and how many variables are there? Everyone check your depth in Java today. जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, but who learn that you can check your depth in Java. Are you aware about these concepts or not? Variable 1 and 1
one dimension array. Okay. Anyone else? One variable and two one dimension array. Got it. बाकी लोग? Yes, tell me, remaining pupils. सभी लोग का आंसर गलत है। सभी लोग का आंसर क्या है? गलत है। क्यों गलत है? आई कैन जस्ट टेल यू। देखो, आप ये सोच रहे हो कि ये लिखा हुआ है एरे ऑफ ए देन बी देन सी एरे ऑफ, बट ऐसा नहीं होता है। Java always recommend always use the braces before the variable name, something like this. तो ये लिखा हुआ है कुछ ऐसा। We are talking about the integer type array. We have a integer type array. That references what? A, B, and C. That is again a array type. C again, that is a which type? Array type. So basically, here is a all are the arrays, but A and B are the single dimension array, while C is your double dimension array. C is your what? A double dimension array. Clear or not clear? Understand now? फिर से मैं समझा रहा हूं, समझना क्या कहा जा रहा है। We are saying that we have a integer type array. Understand it? What we are talking right now? We have an integer type array that references A. That references A. So now A become a which type? A one dimension array. That references B. That's again become a one dimension array. And again we are saying that that references C, and that is also array type. तो हमेशा ध्यान रखना, arrays on arrays what? A two dimension array. Arrays on arrays what? A two dimension array. So basically we are not talking about the integer, we are talking about right now integer type array. We are talking what? A integer type array. Clear? So Java always recommend that if you want to use this concept, देखो Java में हमेशा कहा जाता है कि अगर आपको array define करना है तो always use the braces before the variable name. क्या यूज करना है? Always use the
braces before the variable. This is a simple concept. तो रिकमेंडेशन ये दिए गए और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं दैट इज नोन एज द इसे बोलते हैं डिक्लेरेशन। अब सेकेंड पॉइंट आता है, इसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या बोलते हैं? वी कैन से इक्वल टू न्यू इन राइट। तो इसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। दैट इज नोन एज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है ना? और इफ यू राइट लाइक दिस a इक्वल टू a और 2 इक्वल टू 10, दैट इज नोन एज व्हाट अ कॉन्सेप्ट, इसी को बोलते हैं दैट इज नोन दैट initialization. So basically when you're working on the arrays, that is contain a three concepts. The first is declaration, second is construction, and clear? This is the declaration, this is the concept of construction, this is your initialization. This is your concept is initialization. Means we want to initialize the thing. ओके, अब देखो एक चीज ध्यान रखना, इस जावा में कहा जाता है एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन यू कैन नॉट प्रोवाइड द साइज ऑफ एरे। At the time of declaration you cannot provide the size of array. Why we cannot provide the size of array? You can tell your size at the time of construction time. In which line, Abhishek? Abhi, in which line? Abhi, in which line you want to ask the query? In this line? Already explain you, Abhi, what I told. We are declaring a integer type array. We are declaring a what? A integer type array. Got it? We are declaring the integer type array. That's it.
Can we do this work? Yes, with everyone. Can we do this work? A equal to B. कुछ मैंने लिखा हुआ, इसका मतलब में क्या हुआ, हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और जब हमने ए बता दिया, ए इज ऑलरेडी एरे टाइप. A is of which type? A is already a array type, so you are not required to mention here that is again a array type. What it's okay? We are constructing the array. Cannot enough size. Okay. पहली चीज, जिन लोगों के मन में डाउट्स है, मैं उनको बता दूं, दिस इज द करेक्ट थिंग. हम ऐसा कर सकते. We can do this work. There's no problem. यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. We can do this work. Okay. Now, if you want to do like this, this is written as A and this is written as B. And what happens at the initial level? We are pointing to this one. And this is pointing to this. Lalit, tell me, A के पास क्या होता है? What does the A contain? What A contains? Lalit, I am asking one question. A is which type of variable? In type.
Manish, A is an array type object. That is the int array type. Or array always holds the information about its address. Array always hold the information about object. Got it? Array hold the information about object. तो जब ऑब्जेक्ट के अबाउट इंफॉर्मेशन होल्ड करता है इसका मतलब क्या हुआ कि नाउ वी कैन प्रोसेस इट, हम उस पर फर्दर काम कर सकते हैं। कैसे? जो समझाता हूँ। Now if you run this, you can get it what output. Basically that is known as the hash code. इसे हम क्या बोलते हैं? हैश कोड। हैश कोड का मतलब होता है कि बेसिकली रेफरेंस होता है उस ऑब्जेक्ट का, दैट्स द रेफरेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। क्या चीज? वंस मोर मनीष। पहली चीज तो ध्यान रखना है, जब भी बात एरे की होती है, एरे इटसेल्फ एन ऑब्जेक्ट। एरे इटसेल्फ एन ऑब्जेक्ट। एरे इटसेल्फ क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसका हमेशा क्या होता है? वी हैव अ रेफरेंस। ऑब्जेक्ट का हमेशा क्या होता है? एक रेफरेंस होता है। तो व्हेन यू आर डूइंग द वर्क इज ए इक्वल टू डी, तो इनके बीच में वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। वी आर नॉट चेंजिंग द वैल्यूज, वी आर चेंजिंग द एड्रेस। वी आर चेंजिंग द एड्रेस। अब एक पॉइंट का आंसर समझना, इस चीज को समझने के लिए, ठीक है ना? सपोज दैट आप एक छोटे घर पे रहते थे, यू आर रेंटिंग समवन दैट इज अ वन रूम सेट, ओके, बट फ्यूचर में you have changed that room and you can go shift to the two room set, that creates a problem. Yes, I am asking with everyone, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम होगी आपको? नो, ठीक है ना? अब एक चीज बताना, इस पूरी प्रोसेस के बीच में क्या कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट हुआ? व्हाट यू एक्चुअली चेंज? जब आप वन रूम सेट से टू रूम सेट में चेंज हुए तो आपने एक्चुअल में चेंज क्या किया? प्लेस चेंज किया, ओके। स्पेस, साइज, ऑब्जेक्ट चेंज किया। वो you have changed your address. What you have changed your address? यानी ये रेफरेंस वेरिएबल पहले इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा था, बट अब क्या हो गया? नाउ इट विल पॉइंट टू द सम अदर एड्रेस। अब एक दूसरी कंडीशन समझते हैं। अब आप एक बड़े हाउस में रहते थे, ठीक है, यू आर लिविंग इन अ बिग हाउस, यानी रेंट कर रखा था, बट यू रियलाइज दैट
कि हम तो यहाँ पे वेस्ट ऑफ मनी कर रहे हैं, कि हम इसमें से ज्यादा चीज तो यूज ही नहीं कर रहे हैं, then what you say thinking why we cannot rent a smaller house? तो आप बड़े घर से छोटे घर में भी आ सकते हो, और इस कंडीशन में भी चेंज क्या हुआ, when I shifted from big house to small house, what you shifted now? Again you change your address, अगेन आपने क्या चेंज किया, एड्रेस चेंज किया। तो जब आप ये स्टेटमेंट भी लिखते हो तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये भी अपना क्या चेंज कर रहा है, एड्रेस चेंज कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, इट इज चेंजिंग इट्स एड्रेस। तो ये क्या हो जाता है, इट बी समथिंग लाइक दिस, यानी ए पहले से पॉइंट कर रहा था, फिर कहा नहीं अब मेरा इसका यूज नहीं है, तो इट विल डू द चेंजिंग फ्रॉम दिस, और इसने अपना रेफरेंस यहाँ से क्या कर लिया, रिमूव कर लिया। अपना एड्रेस से यहाँ पे क्या कर लिया, रिमूव कर लिया। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, हम यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं, हम क्या चेंज कर रहे हैं, वी आर चेंजिंग इट एड्रेस। So now we have to understand this concept more. So for that purpose, what we can do now, again we print this, see there what happened after this execution. What you see there, the address of A and address of D both are the same. इसका मतलब क्या हुआ, अब A एंड D दोनों एक ही रेफरेंस को पॉइंट कर रहे हैं, यानी एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। नाउ आई एम जस्ट गिव यू द योर सोल्यूशन। अब इसका आउटपुट क्या, आंसर क्या होता है समझना। देखो, दो दोस्त अलग अलग रह रहे थे, ठीक है ना। देन एक दिन आपके एक दोस्त ने कहा कि मेरे पास एक बड़ा घर है और उसमें मैं अकेला हूँ, व्हाई यू कैन नॉट कम शिफ्ट विथ मी, क्योंकि रेंट तो मैं दे ही रहा हूँ, तो क्या हम साथ नहीं रह सकते। तो व्हाट हैपेंस, दे कैन चेंज इट्स प्रेफरेंस। नाउ अब ए भी उसी को पॉइंट कर रहा है और डी भी उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, यानी रेफरेंस दोनों का क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट को हम एक से ज्यादा रेफरेंस दे सकते हैं, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, एक से ज्यादा रेफरेंस दे सकते हैं। दैट इज सिंपल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी कोई किसी कई लोगों के मन में डाउट होगा, दैट्स यू कैन डू वन मोर थिंग, सी दैट अगर मैं यहाँ पे लिख दूं a ऑफ 5 इक्वल टू व्हाट इट, और मैं यहाँ पे कॉल करूं किसे, d ऑफ 5 को, देखो वहां पे आपको 700 ही मिलेगा। सभी कोई पॉइंट क्लियर है। अब आपको हमेशा कभी भी क्वेरी नहीं होनी चाहिए कि a इक्वल इक्वल टू डी, नहीं इक्वल टू डी नहीं हो सकता है, बट क्या ध्यान रखना है, इन दोनों का टाइप सेम होना चाहिए।
यानी A is also array type and D is also must need to be a array type. अगर ऐसा होगा तो हमारा काम हो सकता है, otherwise we cannot do this work. Got it? और जो लोग अभी आए हैं, मेरा इनसे क्वेश्चन है, why you are joining so late? Yes, I am asking with the people who joins very late. Now, अब कुछ कॉन्सेप्ट और समझने हैं रिगार्डिंग एरे. डिक्लेरेशन पता है, इनपुट आप ले सकते हो, ठीक है ना. तो दैट्स व्हाई आई कैन जस्ट डू द वर्क इज, हम यहाँ से कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है ना. इफ यू वांट टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर, हाउ वी कैन डू दिस. तो ये कॉन्सेप्ट भी हटाते हैं एंड इवन कंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट भी हम भी हटाते हैं. वी कैन आस्क विद द यूजर स्कैनर s इक्वल टू न्यू स्कैनर. But so now you can import the scanner class. Import the scanner class. We have imported it. Now we can take the input from the user. So we can say system dot out dot println, and we can ask is what? Enter the size of array. Enter the size of array. So we can do this work. Construction work is done by after this statement. Int n equal to st dot next, and what we can pass is a n. What after doing this work, we have to use the concept of loop. So for int I equal to 0 to I is less than n and I plus plus. And simply we can use a which concept? We have to use a concept is a of I equal to what? Sc dot next. Got it? So now after this, so we can do this work and then we can again print this. So how we can print this? Copy this and then we can paste it there, and we can say system dot out dot println. Now we can run this and see the output. So it's asking about the suppose that we want to say 5. So 1, 2, 3, 4, 5. So with the help of you can get an input and you can print the data. Clear everyone?
Now in general I can tell you the second concept, and the second concept is how we can use the two-dimension array. How we can use the two-dimension array. Now देखो आपको एक चीज पता है सी किस टाइप की एरे थी? सी इज अ टू डायमेंशन एरे. सी इज अ विच टाइप ऑफ एरे? इट्स अ टू डायमेंशन एरे. तो अगर कोई एरे टू डायमेंशन एरे है तभी वर्क हम कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट डू दिस वर्क. अदरवाइज वी कैन नॉट डू दिस वर्क. तो हमें यहाँ पे एक क्लियरिफिकेशन क्या मिल गया कि सी इज योर विच टाइप ऑफ एरे? इट्स अ टू डायमेंशन एरे. Clear? Now we can remove all these things. Oh, sorry. If you want, you all can note down this also. If you want anyone to note down this, you can note down. Either take the snapshot. Yeah, you can say screenshot. Now, I can remove all this now. Okay. What the things we have focused there? देखो उसको समझने के लिए क्या काम करना है पहले वो समझते हैं. देखो the first thing we can do, we can construct the thing. Construction is done. Now we are creating the 3x3 array. How we can move? देखो बेसिकली किसी एरे को समझने के लिए हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझते हैं एक्सेल पे. समझना understand the things very clearly. When we're creating the 3x3 array, that is not come as 3x3. It will always come in form of this one. We have a, this is a row. Then we have a this. We have a this. And we have this. Clear? यहाँ पे क्या होता है? इट्स 0 1 2. इसके पास भी क्या होगा? 0 1 2. इसके पास क्या होगा? 0 1 2. No. Now we need to understand the concept basically. How we can understand? For the notation we can come and we can use the draw line. देखो इसकी इंफॉर्मेशन इसके पास होती है, इसकी इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? दैट विल गो टू दिस सेक्शन. और इसकी इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? दैट विल गो टू दिस. नाउ वी कैन राइट एज व्हाट? अ 0 1 2. देखो आप समझना, ये जो होता है ये रो की इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है. हर रो की इंफॉर्मेशन इसके पास है. फर्स्ट रो 0, यानी इसका एड्रेस होगा किसके पास? इस पूरी रो का एड्रेस किसके पास है? A ऑफ 0 के पास, यानी C ऑफ 0 के पास. इस दूसरी रो का पूरा एड्रेस किसके पास है?
सी ऑफ 1 के पास एंड इसका एड्रेस के पास है सी ऑफ 2 के पास। नाउ अब आप इटरेशन जब आप करते हो तो आपको पता है कि हमें वैल्यू क्या मिलती है, वी ऑलवेज गेट द वैल्यू एट दिस टाइप, that we can make the format cell that is this type. ये होता है कुछ ऐसा 0 0 0 1 0 2 then 1 0 1 1 and 1 2, then we have a concept is 2 0 2 1 2। सीधे देखो अब पॉइंट को समझना, देखो फर्स्टली हमने इस रो को प्रिंट किया, गेट किया, और हम यहाँ से आ गए यहाँ से, यानी वी कैन गेट अ 0 0, पहला ब्लॉक मिल गया, यानी दिस विल बी एक्सेस, दिस विल बी एक्सेस। ओके, फिर हमने यूज किया 0 1, समझना फर्स्ट रो यानी i इक्वल टू 0 एंड j इक्वल टू 1, सो नाउ दिस विल बी आल्सो एक्सेस, तो यहाँ भी एक्सेस हो जाएगा, कॉपी फॉर्मेट प्रिंटर, और यहाँ भी वही चीज होएगा फॉर्मेट प्रिंटर कॉपी। सिमिलरली फिर अगेन आपने यही काम किया तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, वही रूल अप्लाई हो जाएगा। यानी देखो i इक्वल टू 0 एंड j इक्वल टू 0, i इक्वल टू 0 j इक्वल टू 1, I equal to 0 and j equal to 2. The first row will be iterated. The first row will be iterated. Clear? Now what happens? अब 1 से loop start होगा. So when you can start the loop from 1, it will be straight 1 0 1 0 मिलेगा, फिर 2 0, sorry 1 1 1 1 मिल जाएगा, and 1 2 that we can iterate of 1 2. Done. Now we can go to the third step, 0 2 0, then we can access this, then we can access this, and then we can access this. So this is the way we can do the work. और ये सारे एलिमेंट क्या हो गए, एक्सेस। This concept is clear for everyone? Now, so we can move on which section again? Now we can move on the implementation concept. So firstly we have to take the input. So what we can write, for int I equal to 0, I less than 3 and I plus plus. For int j equal to 0 and j is less than 3 and j plus plus. Clear this? अब देखो हमें यहाँ क्या लिखना है, c of I and c of j equal to what, sc dot next end. अब रूल समझना, I equal to g is started, it will come to there, j equal to 0, j equal to 1 and j equal to 2. Yani first row will become, and first entire value we can read from this place. फिर I equal to 1, then again 0 1 2, and then again I equal to 2, then 0 1 and 2. That means we can read a 9 elements. So after this we have to print. So how we can write the same thing? We can call the similarly, copy this and we can paste it. See there. तो देखो हमें यहाँ पता है we have to not the change the line, the system dot out dot println. ठीक है ना, अब ln नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें लाइन अभी चेंज नहीं करनी।
लाइन हमें कब चेंज करनी है, रो कब चेंज करनी है, आफ्टर दिस लूप। तो यहाँ लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एंड व्हाट वी कैन राइट हियर, वी कैन राइट हियर इज backslash n. Clear? Now we can run this. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ओके, यहाँ पे भी हमने बैक स्लैश n लगा दिया, दैट्स वी गेटिंग अ न्यू लाइन. So we can write 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. So now you can say that you can getting the output as matrix. And that is the representation of two-dimension array. That is the representation of what? A two-dimension array. Now, any other queries? No. So I think you all can work on the two-dimension array also. Okay. Now, देखो मैं सिर्फ आपको रिवीजन करा रहा हूँ, ध्यान रखना कि हमें मंडे या ट्यूसडे से वी हैव टू स्टार्ट अ फुल फ्लैश ऑफ एंड्रॉइड कॉन्सेप्ट, ठीक है ना. तो आपके पास एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन नहीं, बट इन शॉर्ट आपके पास आपका पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए ऑफ जावा, ठीक है ना, ताकि आगे चल के आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी. नाउ next what we have to discuss, we can discuss about the concept of a string concept. Which concept we have to discuss? देखो जावा में जब हम स्ट्रिंग की बात करते हैं, स्ट्रिंग यहाँ पे 3 ways में हैंडल होती है. In Java we can handle the string in 3 ways. The first type is string java dot lang dot string class. Second is java dot lang dot string buffer, and last thing is java dot lang dot string builder. So firstly we have to discuss this concept. Firstly we have to discuss this concept. Okay, how the thing is going to be worked there and how we have to do the working. Got it? तो देखो जब भी हम बात करते हैं स्ट्रिंग क्लास की, स्ट्रिंग क्लास के बारे में एक चीज ध्यान रखना, a string is immutable object. A string is what? Its string is
अच्छा, कितने लोगों को पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्यूटेबल? इम्यूटेबल, देखो इनइम्यूटेबल का सिंपल सा मतलब, जैसे आप सब लोग कह भी रहे हो बहुत से लोग, ठीक है ना, वी कैन नॉट चेंज, यानी हम उस ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस अगर परफॉर्म ना कर पाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? दैट्स नोन एज इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। दैट्स नोन एज व्हाट? अ इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। गॉट इट? तो यहाँ पे इम्यूटेबल का मतलब होता है कि अगर आप चाहो तो भी हम वहां पे कोई चेंजेस परफॉर्म नहीं कर सकते। तो अब आपके मन में क्वेश्चन होता है सर क्या हम वहां पे कोई चेंजेस नहीं कर सकते? वी कैन डू इट, बट व्हेन यू मेकिंग एनी चेंजेस इट विल ऑलवेज क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट। जब भी आप कोई नया चेंजेस करते हो हमेशा क्या होता है? एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। दैट ऑलवेज क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट, दैट ऑलवेज क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट, यानी हमेशा क्या हो जाएगा? हमें एक नया ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि स्ट्रिंग के हाउ मेनी वेज वी कैन क्रिएट। तो स्ट्रिंग को क्रिएट करने के देयर आर टू वेज। द फर्स्ट वे इज योर first is string literal and second is using new keyword. यानी यहाँ पर दो वेज होते हैं किस चीज के लिए? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के। द फर्स्ट वे इज स्ट्रिंग लिटरल एंड सेकंड इज यूजिंग अ न्यू कीवर्ड। यानी हम न्यू कीवर्ड का यूज करके भी क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट क्रिएशन कर सकते हैं। स्ट्रिंग लिटरल एज वेल एज यूजिंग द न्यू कीवर्ड। तब क्वेश्चन आता है हाउ वी कैन डू द वर्क। देखो अब उसके लिए हमें दो चीजें यहाँ पे फोकस करनी होती है। क्या फोकस करना होता है? दैट वी कैन लिसन फ्रॉम दिस प्लेस। पहला कॉन्सेप्ट जो होता है यूजिंग द लिटरल। तो जब हम लिटरल यूज करते हैं ऑलवेज यू कैन गेट अ मेमोरी इन हीप सेक्शन। So how we can write a string s equal to, we can write as a welcome, a string s1 equal to, again we can do the work is welcome, and then we can use the concept of new keyword. So we can write a string s2 equal to welcome, but that you can write like this, string something, and the similarly we have to create another object. So see there what the difference is there. When you are using the concept of string literal, देखो जब भी आप string literal का यूज करते हो क्या होता है? When you are using the concept of string literal, it can get a memory inside a constant pool. It will get a memory inside the string constant pool, and pool is to be checked. पहले pool क्या होगा? Checked होगा. If that is an identical object, then it will be created. अगर ये आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होगा तो ही मेमोरी में क्रिएट किया जाएगा, अदरवाइज वो मेमोरी में क्रिएशन नहीं होगा। कैसे समझने के लिए देखो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, यहाँ पे समझना। एनोटेशन आई कैन जस्ट ड्रॉ समथिंग, सपोज वी कैन क्रिएट अ वन बॉक्स, ठीक है ना। दिस इज योर स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। इसे हम क्या बोल सकते हैं? वी कैन से दिस इज नोन एज स्ट्रिंग कांस्टेंट, ये हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। और हम क्या करना चाहते हैं? अगर इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, मैंने क्या कहा? वी हैव अ वन ऑब्जेक्ट दैट इज अ वेलकम। सो व्हाट हैपेंस? वी कैन क्रिएट दिस
draw, and then we have to write the text. So we can say welcome. This is the first object, and then similarly we can create a new one also there. So we can again draw a circle. Now, first we need to check. देखो, हमने यहाँ पे टेक्स्ट दिया, that is reference is what S, और ये जो ऑब्जेक्ट है किसे पॉइंट कर रहा है, that is pointed by this. अब आपसे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है समझना. मैंने आपसे क्वेश्चन कहा कि now when string literal is encountered, जब भी string literal encountered होता है, the pool is to be checked. pool पहले चेक किया जाएगा, क्या वो ऑब्जेक्ट यूनिक है. if yes, then it will be going to be created inside the memory. otherwise that object have additional reference. तो चलो एक बात बताओ सब लोग. if you do this work, string s equal to welcome, one object is created. if you can execute the string s1, क्या welcome यहाँ पे identical है, yes or no? it's a unique or not? क्या वो यूनिक है या नहीं है? और कोई? नो. देखो समझना पे, दिस इज नॉट यूनिक, क्योंकि अगर आप देखोगे तो एस वेलकम ऑलरेडी बना चुके, यानी वेलकम नाम का एक एट्रीब्यूट ऑलरेडी वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, यानी सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग. तो मैंने आपको रूल क्या बताया कि व्हेन द स्ट्रिंग लिटरल इज एनकाउंटर्ड द पूल इज टू बी चेक. पूल पहले चेक किया जाएगा, क्या वो जो ऑब्जेक्ट आप बनाने जा रहे हो वो आइडेंटिकल है यानी यूनिक है. उसने आंसर दिया नहीं. तो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट जो करंटली एग्जिस्टिंग है उसी को एक एडिशनल रेफरेंस मिल जाएगा, किसका, S1. यानी S and S1 both are pointing to which object, the same object. क्लियर सभी को? yes or no? यानी क्या होता है, पहले चेक किया जाएगा और चेक करने के बाद ये चेक होगा, अगर वो ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्रिएट किया जाएगा, और अगर वैसा ऑब्जेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको एक एडिशनल रेफरेंस दे दिया जाएगा. क्या दे दिएगा, यू कैन गेट एन एडिशनल रेफरेंस. तो हमें एडिशनल रेफरेंस मिल गया. वो एडिशनल रेफरेंस क्या था, S1. आप समझना, एक ही ऑब्जेक्ट और उसे पॉइंट करने वाले मोर देन वन और रेफरेंसेस. इसका लाइव एग्जांपल होता है योर हॉस्टल रूम नंबर. अगर रियल टाइम ऑब्जेक्ट की बात करोगे तो आपका क्या होता है, जो आपका हॉस्टल रूम नंबर होता है वो क्या होता है आपका, दैट इज योर द सेम काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट. 101 रूम में एक से ज्यादा लोग रहते हैं, दैट इज 2 3, दैट डिपेंड कि हाउ मेनी ऑक्यूपेंसी दैट. तो बट वो भी क्या होता है, एक इम्यूटेबल होता है, आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते. यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस इन दैट पर्टिकुलर हॉस्टल रूम. तो सिमिलरली यहाँ पे क्या हो गया, अब क्या हुआ कि आपने 2 लाइन एग्जीक्यूट की, बट इन 2 लाइन से कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए, यू हैव ओनली क्रिएटेड अ वन ऑब्जेक्ट. क्लियर ना. अब हम एक छोटा सा और काम करते हैं, वी कैन क्रिएट अनदर मेमोरी ब्लॉक जिसे हम कहते हैं हीप सेक्शन. ये हमारा है हीप सेक्शन, सपोज दैट. इसे हम क्या करेंगे, दैट इज नोन एज हीप सेक्शन, और इसे हमने नेम दे दिया. अब यहां पे भी 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे. देखो ध्यान रखना, जब भी न्यू कीवर्ड यूज किया जाएगा, एनी टाइम जब भी आप न्यू कीवर्ड का यूज करते हो, हमेशा एक नया ऑब्जेक्ट मेमोरी में क्रिएट जरूर होगा. यानी यहां सोचना नहीं है, यहां हर हाल में क्या होगा, ऑलवेज अ न्यू ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड. दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द.
तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑलवेज अ टू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, so that will be part of this. तो यहाँ क्या हो जाएगा, वेलकम एंड वी कैन से वेलकम. क्लियर. सो देखो अब इसे पॉइंट कौन कर रहा है, दैट इज पॉइंटेड बाय द S1 S2 and that is pointed by the S. How that we work, see. तो टोटल इन चार स्टेटमेंट से कितने ऑब्जेक्ट बने, ऑल ऑफ यू. अगर आपने चारों लाइंस एग्जीक्यूट की तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स आपके पास आए, 3 ऑब्जेक्ट, 1 इन कांस्टेंट पूल एंड 2 इन अ हीप सेक्शन. देखो बेसिकली हीप, जो कांस्टेंट पूल होता है वो भी हीप का ही पार्ट होता है. यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसे बताया है, बट स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल इज आल्सो अ पार्ट ऑफ हीप मेमोरी. बट यहाँ टोटल ऑब्जेक्ट कितने बने, 3. अब इसे प्रोग्रामेटिकली समझते हैं कैसे. नाउ वी कैन कम बैक देयर. सो लॉजिकली क्या करना है, वी कैन क्रिएट अ न्यू प्रोग्राम. और नाम रख दिया str demo and we can create a public static void main function. So what we have to do the work, delete this string s equal to, we can use as the welcome, string s1 equal to what, again welcome, string s2 equal to what, new string, and then we can say welcome, and we can copy this and we can say string s3 equal to what. Now if you can write this statement, see there, system dot out dot print ln, and what we can do the work is, हम यहाँ पे लिख देंगे s equal to s1, as well as we can write system dot out dot print ln, and what we can write here, s2 equal to s. अब देखो एक पॉइंट समझना, if both are pointing to the same object, अगर दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, we can get a true, we can get as a true, और otherwise we can get as a false. तो हमें पता है s और s1 दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, यानी रेफरेंस कंपैरिजन होगा तो क्या हो जाएगा, ट्रू मिल जाएगा. और s2 और s3 कंपैरिजन हो रहा है, यानी हमें इस कंडीशन में क्या मिलेगा, फॉल्स. क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं. तो see there, if you run this, what the output we can get. So the concept we learn, that's a correct or not? ठीक है ना. तो मीन्स क्या होता है कि जब भी हम कोई बात करते हैं, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल है तो मेमोरी कहाँ मिलेगी, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में. और स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में हमें क्या देखना होता है कि क्या वैसा ऑब्जेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, अगर हाँ तो नया ऑब्जेक्ट क्रिएशन नहीं होगा, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को एक एडिशनल रेफरेंस मिल जाएगा. बट अगर आप लिटरल के जाए यूजिंग द न्यू कीवर्ड कर रहे हो तो हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट मेमोरी क्रिएट किया जाएगा. यस तो अब किसी के मन में कोई क्वेरीज हैं तो पूछ सकते हैं सब लोग. और हाँ सबसे एक क्वेश्चन और पूछना था, सबके पास लैपटॉप है तो हाउ मेनी रैम, कोई ऐसा जिसके पास रैम आपके लैपटॉप में 4 GB सॉरी 8 GB से कम है, जितने लोग भी प्रेजेंट हैं, हाउ मेनी पीपल आर देयर whose RAM is below 4 GB.
4 GB सॉरी 8 GB से कम कितने लोगों की रैम है? कोई ऐसा है? बिलो 8। राखी, हाउ मच रैम यू हैव? 4। किशन, आप में कितना है? 4। तो फर्स्टली आई टेल यू ऑल ऑफ यू, ठीक है ना, यू मस्ट नीड टू इंक्रीज योर रैम, ऑल ऑफ यू, ठीक है ना. I think market is open, so you can purchase it online. That is not a problem. Either you can take from any shop. Okay, at least you can make your laptop with 8 GB ready. If you want to work smoothly, देखो 4 GB पे वर्क हो सकता है, but it will lag little bit. Got it? So अगर मैं कहूँ you are typing something and waiting you are for the help, so that not good for you, ठीक है ना. तो एक काम करना, you all can do the work is what you have to enhance your RAM till 8 GB. आप उसे ज्यादा कर ले तो it's a good, but minimum you can make it the 8 GB. Okay, I think if your lap DDR4 RAM, you can just get a cost under 2000 rupees. Okay, so I think you all can see that. हो सकता है आपको इससे ज्यादा भी मिल जाए, ठीक है ना, क्योंकि I think you can get a 22 or 2300 around. You can get a 4 or 8 GB RAM. So you can purchase it and you can just put it, ठीक है ना. आपके पास 3 दिन है, you can do this work within 3 or 4 days, so that when we can start the Android, you all are able to work very smoothly, ठीक है ना. क्योंकि एंड्रॉइड स्टूडियो थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है एज कम्पेयर टू द अदर सॉफ्टवेयर ऑफ जावा. तो यहाँ पे आपको थोड़ा रैम की प्रोसेसिंग ज्यादा चाहिए होती है. सेकेंड थिंग, आई होप एवरीवन हैव योर फोन्स. सबके पास अपने पास एंड्रॉइड फोन होंगे. यस? तो ऐसा तो नहीं है जिसके पास नहीं है. किशन, इफ यू ऑलरेडी इंस्टॉल, आई एम नॉट टॉकिंग, बट अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ इंस्टॉलेशन आपको करना है टिल मंडे तक सबके पास इंस्टॉलेशन होना चाहिए, ठीक है ना. सो आप जो एप्लीकेशन रन कराओगे वो आप रन कराओगे अपने फोन में. आपको एंड्रॉइड डेवलपर्स कैसे ऑन करना है, दैट आई कैन टेल यू इन लेटर ऑन क्लासेस. कैसे आप इनेबल करोगे एंड कैसे आप डिसेबल करोगे, ठीक है ना. तो आपको वो सारी चीजों यहाँ पे फोकस करना है कि हम चीजों को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे एंड कैसे प्रोसेस करना है. मैंने अभी आपको सिर्फ बेसिक रिक्वायरमेंट बताई है जो हमें एंड्रॉइड की ट्रेनिंग में चाहिए. अगर आपके पास फोन है तो इट्स ऑलवेज ए गुड, क्योंकि आप चीजों को डायरेक्टली डिप्लॉय कर सकते हो अपने फोन पे. सेकेंड थिंग, यू विल मेक योर रैम एट लीस्ट 8 GB, so that you can get a good performance, good help and smooth working, ठीक है ना. और everyone can install the Android Studio, ठीक है ना. और if you have any queries, you can ask with me there. Either you have a group also there. So many people who will be joined, either not join the group yet. I can just again sending the link. You can join using this. Copy this. तो जिन लोगों ने अभी भी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो यहाँ से ज्वाइन कर लें, और अपनी क्वेरी जो भी रिगार्डिंग आपको मैसेज होंगे वहां पे आपको शायद शेयर किए जाएंगे, ठीक है ना. सेकेंड थिंग, अगर आपको फर्दर कोई क्वेरी रहेगी, दैट वी आर एबल टू डिस्कस हियर आल्सो. यानी ट्रेनिंग में tomorrow is class is held. Tomorrow is what day? Saturday, na? Yeah. Tomorrow's class is going to be happen, Kishan. You know, this is a group. So the people who have not joined the group yet, they can also join it. जिन्होंने भी अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो क्या करेंगे, ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे. और कल क्लास होगी, दैट्स द सेम टाइम. और जो लोग थोड़ा लेट ज्वाइन करते हैं उनके लिए भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि यू कैन ऑल्सो स्टार्ट ज्वाइनिंग ऑन टाइम. अगर टाइम पे ज्वाइन नहीं करोगे तो यू कैन फेस द प्रॉब्लम. दैट्स नॉट इन माई हैंड.
Ashish, by default, from my point of view, it's a Monday to Saturday is a fix. Okay, Monday to Saturday, the classes is fixed. What about the Sunday? That I am not aware right now. And definitely, I am not make any changes in a class. But from my point of view, it's always a good time if you learn something in the morning. We can use the Android Studio. I am just your instructor for your Android training entirely. Yes, you can make a project, but that we can discuss when we can start the Android. Okay, Saket? Yes, Smriti, now the point is clear. So we have to make wake up early. There's no problem. Then you can again sleep in afternoon. There's no problem. Okay. So now you we all see tomorrow at the same time. Okay. Goodbye all of you, and you all can join the group also. I'm sending the link again. Who have not joined? Okay, na? So now bye bye all of you. See you same time tomorrow.